that we need to know that there are certain physical quantities that are labeled with a prefix. So we need to understand the knowledge of some prefixes. So prefixes in physics are generally kilo, micro, nano, pico, and in this list it could be mega, giga, tera, things like those. Now, you're more familiar with this term, kilograms. This is what you already know. Kilograms hota hai, kilometers hota hai, right? So these terms, they're not actually any physical quantity. They have a physics, prefix to a physical quantity. So it's like, for example, we have Manahil with us and we have, Parisa with us. So maybe in future, you guys plan to be a doctor. So it's like Dr. Manahil. So it doesn't change the quantity, it adds a prefix to your name. Maybe, Parisa becomes an engineer, so she writes engineer, right? Something like this. So this is a prefix with the original quantity. So prefix helps us to know the magnitude, the size, कितना बड़ा कुछ है उसके बारे में अगर हमें बात करनी तो हमें usually what happens in physics is they generally use these things जहाँ पे हमें क्या कहते हैं क्वांटिटीज को रीड आउट करना होता है वो समझना होता है तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में फिर उसको लेके आना होता है दैट मीन्स अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल से एक क्वेश्चन है मैं इनको बाद में समझाऊंगा आपको लेकिन पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ लेट्स से द क्वेश्चन सेज कार ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर्स से पर आवर So now, whatever operation they intend me to do, they want me to do, I need to convert this kilometers into say meters. So now, I need to understand कि ये जो K था, which shows kilo, इसका क्या मतलब था? Similarly, there might be a question that says, uh, bacteria lives for 2 microseconds. Say, now, what does that means? Micro is a prefix. Second is something related to time. So I need to convert, I need to know what happens with this micro thing, and I need to have a relevant conversion between micro and seconds. ठीक है सो इसके लिए यू नीड टू मेमोराइज दिस अच्छा कल मैंने जो आपके साथ कुछ आपको स्लाइड्स भेजी थी इफ यू रिमेम्बर उसमें ये सारी वैल्यूज हैं सच एज किलो अगर हम थोड़ा सा आगे चलें किलो इज रिप्रेजेंटेड बाय अ के और इसका मतलब होता है 1000 मेगा इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम और इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट 6 10 विद पावर 6 गीगा इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी और इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट 9 टेरा ये कैपिटल टी से रिप्रेजेंटेड होगा जिसका मतलब होगा एक्सपोनेंट 12 तो अब यू नीड टू नो इट कुड बी मेगा सेकेंड्स गीगा बाइट्स आपने सुना होता है जीबीज टेरा बाइट्स आपने सुना होता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में किलोग्राम सुना होता है तो ये आपको याद करना होगा इट्स नॉट अबाउट कि दे आर लिमिटेड टू ग्राम्स और बाइट्स इट कुड बी किलो मीटर्स इट कुड बी kilograms, it could be kilohertz, it could be kilojoules. So इसी तरह से मेगा है तो मेगा में you can have mega seconds, maybe mega amperes, giga amperes, so things like those. तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि जब ये वाला गिवन प्रीफिक्स लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब है सिमिलरली जो स्मॉलर वैल्यूज को शो करते हैं दे आर माइक्रो सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये वाला डिजाइन and the value is 10 with power -6 nano. This is represented by n. So this is 10 with power -9. Then we have eco. So that's a small p. That is 10 with power -12. So these are some of the commonly used prefixes you are going to experience and you need to know and you need to learn this. It is very easy. मतलब इतना कोई मुश्किल है नहीं यू ऑलरेडी नो गीगा टेरा ठीक है नैनो और पीको में भी शायद नया हो किलो और मेगा तो सबको पता होता है तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि इसके लिए हम बैठ के कोई न्यूमोनिक्स वगैरह बनाएं तो ये बड़ा आसान है अगर आप याद करना चाहें इसे तो
ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आप। देन द अदर पार्ट इज कि वी नीड टू नो कन्वर्जेंस। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि इफ वी हैव 20 किलोmeters एंड वी इंटेंड टू कन्वर्ट इट इनटू meters, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद 1000 एंड आवर आंसर वुड बी 20,000 meters। ठीक है। सिमिलरली इफ वी हैव से 20 meters and we intend to convert it into kilometers. So we need to divide this with 1000, right? So this would be 20 into 10 with power negative 3 kilometers. तो ये हो जाएगा। इसी तरह से if we have something like say 50 giga seconds and we intend to convert it into seconds. So 50 and then what was giga? Giga was 10 with power 9. So this becomes 10 with power 9 seconds. So ये convergence भी आपको आनी चाहिए। सही है, बात समझ में आती है? Any questions? I think this is very basics, तो इसमें कोई मसला होगा नहीं वैसे, लेकिन if you still have a doubt, do let me know. Acha, okay. The other thing which we intend to do today is to study vector quantities. Now, in physics, we do have some scalar quantities and we do have some vector quantities. Scalar quantities are basically those quantities which doesn't need us to specify their direction. So they just have a numerical value or a magnitude. Now, what does that mean? So if I'm buying some apples, so I can say a dozen apples. Okay, maybe 100 kilograms of something, maybe uh, you know car moving at 100 meters per second. So these quantities, they don't specify which direction are you going in. So directions are essentially north south east west. ये आपको याद रखना होता है। एग्जाम में आजकल ये चल रहा है कि लोगों का ईस्ट और वेस्ट फ्लिप हो जाता है। तो आप याद करना, आप लोगों के लिए बड़ा आसान है। ईरान भाई इज राइट साइड इज ईस्ट। दिस इज इसराइल भाई इज वेस्ट, या यूएस भाई दिस इज वेस्ट। रॉन्ग, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रख लेना, बट ये भूलना नहीं, बिकॉज आई एम डन विद दिस कि मैं ईस्ट और वेस्ट कराता रहा आपको। नाउ वेक्टर क्वांटिटीज आप डिसाइड नहीं करोगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। वेक्टर क्वांटिटीज डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। वेक्टर क्वांटिटीज की एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले वी हैव डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये हम बाद में बात करेंगे। वी हैव वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, ये भी हम बाद में बात करेंगे। व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये भी हम बाद में बात करेंगे। बट यू नीड टू नो कि ये सारी क्वांटिटीज डायरेक्शन के साथ ही चलेंगे। फोर्स ऑफ एनी काइंड, आपको फ्रिक्शन कह दे कोई, आपको वेट कह दे कोई, किसी भी तरह की फोर्स, दैट बेसिकली कम्स इन वेक्टर क्वांटिटीज। मोमेंटम क्या होता है, बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये सब हम वेक्टर क्वांटिटीज में रखते हैं, बट इनका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी छोटी छोटी बातें करके आपको कुछ बातें समझाई जा सकती हैं। सच एज वी कैन टेक इनटू अकाउंट डिस्प्लेसमेंट। नाउ आप थोड़ा सा सोचते हैं और एक प्लान करते हैं, और फिर आपको एक बात समझाते हैं। लेट्स से हमारे घर में एक कार खड़ी है। ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर एक एडवेंचर ट्रिप हम प्लान करते हैं। एडवेंचर ट्रिप जाहिर है अगर हम प्लान करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें अम्मी अब्बा तो नहीं होंगे ना, क्योंकि एडवेंचर हो रहा है। अब एडवेंचर में अम्मी अब्बा घर से चले गए थे, अम्मी अब्बा को हमने कहा आज आप घर से जाएं, दोनों ना यू स्पेंड टाइम टुगेदर, ताकि हम लोगों को थोड़ी सी प्राइवेट स्पेस मिल जाए। अब आप सिबलिंग्स ने डिसाइड किया एडवेंचर ट्रिप पे चलते हैं। भाई एडवेंचर ट्रिप पे गाड़ी की चाबी उठाए निकल गया, इधर उधर जो भी करना था करा, और गाड़ी को अनडैमेज कंडीशन पे वापस लाके अपने घर में खड़ा कर दिया, और एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़ा कर दिया जहाँ पे वो थी। ठीक है, फ्यूल भी कम हुआ था, तो वो आप लोगों ने अपने मतलब माइंड में माइंडफुल होके जितना कम हुआ था उतना डलवा दिया। नाउ जस्ट आंसर मी दिस क्वेश्चन, is there any way that I can get to know, was being a parent, that my car was used, if it is not consuming any fuel right now, and it looks exactly where it has to be, गाड़ी में कोई ट्रैकर श्रैकर भी नहीं लगा हुआ है, हाउ वुड आई नो कि मेरी गाड़ी यूज हुई है या नहीं?
Hello, people. Where are you? Lost? Or you haven't planned that kind of an adventure in your life? Maybe still, if you haven't planned it, so you need to know कि कोई ना कोई तो एडवेंचर कर ही रहे होगे ना. बताओ. Is there any way so that we know कि भाई गाड़ी इस्तेमाल हुई है हमारी एब्सेंस में नहीं है? Isn't there like a meter thing that goes up or something? Nice, nice. So we have a digital meter that gives us the reading of the mileage, in kilometers. कि भाई गाड़ी जो है से when it was parked, it was like 1,000 kilometers, and then now when it is coming back again, so it's like on 1015 kilometers. So anyone who has kept up, now this is very difficult to know. अब मैंने गाड़ी हर वक्त जब भी पार्क की है मुझे कौन सा याद होगा कि एग्जैक्ट माइलेज क्या था, राइट? सो लेट्स से इट वाज 1000 and now it's 15. So the displacement my car did in my absence is basically 15 kilometers. सॉरी, अभी आपको डिस्टेंस की बात बताते हैं. डिस्प्लेसमेंट जो है वी आर गोइंग टू गो लेटर ऑन. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय माय कार इज 15, राइट? 15 किलोमीटर्स. इफ दैट वाज द रीडिंग. जो गाड़ी में डिस्प्ले होता है दैट इज नोन एज ओडोमीटर. It gives you the mileage and speed stuff and the RPM stuff and everything like that. So that's an odometer. That's a device that is used to know speed and all everything. अच्छा, अब mileage आ गया, distance 15 kilometers. But in physics, what happens is if we measure displacement, same thing with the direction, displacement of the car. So displacement of the car would be zero. Now let's understand this. For example, this car, this started from A, came to B, then went to C, and then traveled all the way back to D, and then came back to E. वापस से आ गया. ठीक है. So this passage, which is kind of the same package, मतलब that's your home. और यहाँ पे maybe that was some restaurant, that was some cafe for ice cream or stuff. Let's say that was the fuel station, and then the car came back, right? So physics में displacement of this car is zero because it is starting where it ended. That's the important thing. मतलब से initially this was 5 kilometers east. This is say यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं 2 kilometers south, right? And then this would be again 5 kilometers say west, and then it is say 2 kilometers north. So all of this, stay focused, all of this comes up with a direction as well, right? ये रहा. सबके साथ एक एक डायरेक्शन भी है हमारे पास. सो दिस डायरेक्शन थिंग is basically enabling us to keep a track कि भाई मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, right? And then ultimately I'm back. So if I want to tell anyone displacement of my car, so my car is not displaced because it is parked where it was supposed to be parked even when it has moved a lot of distance. ये बताओ, ये बात समझ में आई? Could you explain it once again? Yeah, sure. What about you, Manahil? Yes, I understood. अब let's say we have another example. Let's say हम इसी की बात थोड़ा सा expand करके करते हैं, and we kind of go through another example. Let's say there is a plane that started to fly from Karachi, and it's inbound to Islamabad. ठीक है. So the distance between Karachi to Islamabad is say 1700 miles maybe, approx, whatever it is. Now, after the plane landed at Islamabad, it again is inbound to Karachi, right? So at the end of the day, what I can say is the plane's net displacement is zero. Why? Because it is coming back to the point where it started off. Okay? Let's see another example. Same plane, if it started from Karachi, it went all the way to Lahore, and then it all the way went to Islamabad. ठीक है भाई? So say that was
100 miles, that was, maybe 1500 miles, maybe whatever, just like this. So now if the same plane comes back to, say, for example, Lahore, and it kind of, stayed here only. It is not going back to Karachi. Let's say the entire journey is stopped here. So I can say my net displacement is no more zero. Why? Because I am, ending at a point that's different from the startup point, right? So maybe, on map, this is Karachi, say this is Lahore, and that's Islamabad, say. So initial flight trajectory would look something like this: Karachi to Lahore and then Lahore to Islamabad, right? And now final trajectory would be something like coming back to this zone only, right? So where am I right now? I'm here. So my displacement, my net displacement would be something like this. Let's select a different color. So my net displacement would be something like this, because that's where I started off and that's where I am right now. So my net displacement here is not zero, is not zero. My net displacement here was zero because I went all the way from Karachi to Islamabad like this, and then I came back to the same position. But in both of these examples, plane does traveled a lot of distance. Do you get this? Yes. Parisa, what about you? Yes. अच्छा, अब एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. ये तो जाहिर है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, बिकॉज यू आर नॉट इनटू काइनेमैटिक्स एंड ऑल. बट से वी आर प्लेइंग अ टग ऑफ वॉर ग्रुप वायर. ठीक है ना? दिस इज द रेड थिंग, एंड दिस इज टीम ए हियर एंड दैट्स टीम बी हियर. Team A is pulling towards, say left hand side with a force of 500 Newton, and team B is pulling towards right hand side with a force of 500 Newton. So I can very much easily, conveniently say there is net force zero. There is no net displacement, जो भी मैं कह रहा था ना, no net force. So that explains the concept of a vector quantity, because 500 left and 500 right cancels each other out. बात समझ में आती है? So you can say 500 west and 500 east kind of canceling each other out. So the rope is exactly in rest. It is not going anywhere. So that's how net displacement is working. However, if say this increases to 700 Newton, now you won't have this anymore, right? What would happen? This flag thing is going to go here. So we can say down the net force is 200 newtons left, right? Do we get this? बेटा ये बताओ, ये बात समझ में आ गई है? Yes. अच्छा, अब आते हैं इसके अलावा. हाउ डू वी कैलकुलेट net displacement when there is some kind of a different travel journey? ये इस तरह का मजाक नहीं है कि लेफ्ट और राइट है. So we can use Pythagoras theorem to work that out. And before we start with that thing, I need you guys to answer me this question. Do you know this theorem? Yes. What does it say? So in a right angle triangle, what we say is we have hypotenuse, we have adjacent, and we have opposite, right? So according to this theorem, we can relate hypotenuse with adjacent and opposite side.
and we can do this thing, squaring thing, right? So if hypotenuse is represented by A, adjacent is represented by B, opposite is represented by C, so we can go with like A squared is equals to B squared plus C squared, right? ऐसे ही है, ये आता है आपको, और अगर ये नहीं आता तो दैट्स द पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स व्हाट यू नीड टू नो ओनली। ठीक है, अब आते हैं से देयर इज समथिंग दैट मूव्स essentially, let's say that's the question. A plane flies 100 kilometers north, then it flies 200 kilometers, say, west. Part A mate says calculate the total displacement of the plane. So how can we work that out? So इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. First is I can just do some constructions that's not to scale, just imaginary constructions. So 100 kilometers not मतलब, let's say if we started here, so 100 kilometers not मतलब सब कुछ ऐसे गए हैं भाई साहब, that's 100 kilometers, and then it goes 200 kilometers west. That means he goes something like somewhere like this, right? So that's 200 kilometers. So what's my net displacement? What's the total displacement? What's the overall displacement? So that's my overall displacement. I need to find this out. So does it look like a right angle triangle? Answer is yes. This is 100 kilometers and that's 200 kilometers. I intend to find this green side. So what should I do? I can just assume this to be x squared. So this would be 100 squared plus 200 squared, right? So can you work this x out? आंसर दो जरा मुझे चैट में, लेट्स सी हाउ गुड यू आर इन दिस। So very good. The answer is 223.6 kilometers. That's my displacement, right? But इसमें एक और चीज भी बतानी पड़ेगी, हमें डायरेक्शन ही बतानी पड़ेगी. But if you write 223.6 kilometers, that doesn't look like a displacement, right? Because इसमें कहीं आपने डायरेक्शन तो नहीं बनाई. So that's north, that's west. So somewhere something going like this towards the green side would be traveling northwest. Do we get this? Do we get this? Yes. Similarly, the same question could have been attempted using, scale diagram. So if I want to try the same question through a scale diagram, how am I going to do it? So there are two values, that's 100 kilometers and there are 200 kilometers, right? Ab 100 kilometers or 200 kilometers, obviously, when I'm going to draw it on my, paper, I need to have some scale. So say, let's assuming 50 kilometers on, scale represents 2 centimeters on page. So 100 kilometers north का मतलब क्या होगा? I actually draw a line of 4 centimeters, right? Pointing north. ये बताओ, ये बात समझ में आती है? Yes. Then
I have to go to west. So 200 kilometers के लिए what I'm going to do, I'm going to place my ruler here. इसको इस तरह से लेके जाऊंगा and I need to draw a line of 8 centimeters like this because that would be 200 kilometers in west, right? So now I'm going to measure this length. अब वो जो हम कल कर रहे थे कि आप कैलिपर से मेजर करना चाहते हो या रूलर से मेजर करना चाहते हो, फर्स्ट आई एम गोइंग टू कनेक्ट दीज 2 points and then I'm going to measure the length of this line. So whatever the length of this line, अगर actual में वही calculation है जो अभी हमने की थी, so this length of the line should be somewhat around 223.6 था, divided with 4 divided with say 2. तो हमारे पास जो स्केल है वो आ जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, सेंटीमीटर 25 किलो, तो yeah, so this length would have been somewhere around 8.9 centimeters. So अगर हम 8.9 centimeters को again if we multiply this with 2, so the answer would be around same thing वो जो अभी हमने निकाला था, that would be 223 point something. इसमें फायदा ये होगा कि इसमें एग्जामिनर आपको ये नहीं कहेगा कि आप डायरेक्शन भी लिख दो, because he can see this direction very much clearly whatever this length comes out to. ये बताओ, ये बात समझ में आती है? ड्राइंग की भी बात समझ में आती है आपको, और अदर देन दैट आपको सिंपल कैलकुलेशन की भी बात समझ में आती है? सो दिस इज ऑल इन बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज जिसे आप कहते हो। इसके अलावा इसमें फिजिकल क्वांटिटीज में और कुछ भी नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम आपके साथ करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, नाउ इज द टाइम टू आस्क। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, एक तो कल मैंने आपको चीज़ भेजी थी, राइट? उसमें 2-3 क्वेश्चंस थे। वो मेरा नहीं ख्याल कि आज आप अटेम्प्ट करें। वी कैन डू दैट लेटर, क्योंकि उसमें मैथ्स और दूसरी चीज़ें भी हैं, तो वो हम नहीं करना चाहते। हम आज कुछ और करना चाहते हैं। तो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स।
So, do you guys receive the file I shared? हेलो। बेटा आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की फाइल मिली है अभी जो मैंने भेजी है? Yes, received. हाँ, उसमें उसमें व्हाट यू इंटेंड टू डू, फिलहाल तो वो पूरी नहीं करनी है, बिकॉज अगेन उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस करनी है। उसमें इफ यू स्क्रॉल टू द लास्ट पेज you'll फाइंड अ क्वेश्चन दैट्स फ्रॉम पास्ट सीरीज। कैन यू डू इट? बिल्कुल लास्ट वाला। Question 12. The question and the last page, yeah, what does it say? Can you see it? So the question says, state how a vector quantity differs from a scalar quantity. Would you be able to do this? And the question then says, circle the vector quantities in the list. And these were the quantities which I just kind of ended up explaining you कि एक list होती है, वो list हमें याद करनी है, right? Do you guys remember that? Beta, is it done? Yes. Yes. अच्छा,
लास्ट क्लास में आई हैव शेयर्ड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद यू गाइस, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स थी. नाउ आई हैव शेयर्ड अनदर दैट इज फॉर catered to you guys only. So ये आपके पास है. This helps us to have kind of notes and everything in this one thing. uh, this file would only work fine if you have a PowerPoint in your iPad or your laptop. अगर आप Google Slides use करोगे, so this won't work fine. ठीक है, because this is kind of a worksheet PowerPoint where you get to study and then you need you'll mark some things and then only the answers would pop up. You won't find everything on the slide at a single click. So whoever is using Google Slides, this won't work fine. You have to install a PowerPoint in your iPad or your laptop. ठीक है. So let's go through this. जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. मैटर एंड एनर्जी आपको सिर्फ समझाने के लिए, नॉट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन बट रिलेटेड टू फिजिक्स. जनरल आइडियाज अगेन. ठीक है. कुछ लोगों को ऑनर करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए कि इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हुई है सारी की सारी. पहले इट वाज गोइंग वेरी फाइन. बस इन लोगों को याद रखें अपनी दुआओं में ख़ास. फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं. देन वी हैव कि आप रट्टा मार लें पूरा का पूरा और उसको फिर अटेम्प्ट करते करते आंसर्स लिख लें. ठीक है. देन वी हैव एसआई यूनिट्स जो हम कर चुके हैं. बेस क्वांटिटीज़ हम कर चुके हैं. ये एक स्केच है टेबल का जो हम आपको दे चुके हैं, बना चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं आपसे. डिराइव क्वांटिटीज़ का भी हमने डिस्कशन किया था. डिराइव क्वांटिटीज़ कैसे बनती हैं, हमने कहा था कि हम मिक्स कर देते हैं बेसिक क्वांटिटीज़ को. सो वी हैव डिराइव क्वांटिटीज़. कुछ डिराइव क्वांटिटीज़ में फिर हमारे पास जो अभी हम बातें कर रहे थे प्रीफिक्सेस आ जाते हैं. तो कॉमन प्रीफिक्सेस का एक चार्ट यहाँ पे आ गया. गीगा, मेगा, किलो. इसमें डेसी और सेंटी भी हैं. आप को अगर वो नहीं पता तो आप देख लीजिएगा, वरना डेसी और सेंटी कॉमनली सबको पता होते हैं. सेंटीमीटर्स और डेसीमीटर्स तो इसलिए मैंने अपनी स्लाइड में नहीं लिखे थे. यू कैन फाइंड दैट आउट. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस जो आप कर सकते हो कि किस तरह से प्रीफिक्सेस यूज हो रहे हैं और किस तरह से आप आंसर्स अपने लिख रहे हो. ठीक है. देन यू हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे आप ये कर सकते हो. फिर सॉल्व करने के लिए यू विल हैव द आंसर्स हियर. लेकिन पहले आप खुद कर लेना, देन यू विल फाइंड आउट कि यहाँ क्या हो रहा है. ठीक है. सिमिलरली सेंटीमीटर्स, मीटर्स, दिस इज बेसिकली मैथ्स नॉट फिजिक्स, तो मैं इसकी डिटेल्स में गया भी नहीं था. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ये कर लोगे. लेकिन इफ़ यू फाइंड एनीथिंग कि इसमें कोई मसला है तो आप मुझे बता देना. आई विल गो थ्रू विद दिस. ये भी आप स्किप कर सकते हो. ये आपके सिलेबस में अब नहीं है दोनों जगहों पर. बट यहाँ से हमने डिस्कशन किया था एंड आई टोल्ड यू वर्नियर कैलिपर्स इसमें से स्किप हो जाएगा. बाकी इसमें सब कुछ लिखा हुआ है. हाउ टू रीड एनीथिंग, पैरेलक्स एरर क्या होता है, कल हम बातें कर रहे थे. टेप मेजर क्या करता है, माइक्रोमीटर क्या करता है, माइक्रोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हमने किए भी थे. देन हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ टाइम. हाउ डज दिस वर्क, ये भी रहता है, तो ये हम बाद में करेंगे. तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू अभी, राइट नाउ, इन अ फ्यू मिनट्स, go through these slides in units 1.1, 1.2, and 1.3, and then tell me if there is any confusion or a question that you want me to explain. लेकिन be cautious. ये आज ही करके आज ही खत्म करना है. ये ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी देखा नहीं, अभी आप टाइम ज़ाया करो, अगली क्लास में आप मुझसे पूछो. नो, ऐसा कोई सीन नहीं है. जो भी क्वेश्चन है 1.1, 1.2, 1.3 में अभी करना है. नहीं समझ में आ रहा अभी पूछना है. एम आई क्लियर इन माई इंस्ट्रक्शंस टू बोथ ऑफ यू? Yes. ठीक है. आई विल वेट नाउ. You start your work.